My name is Dino Uppal. I was born and brought up in England, but I have an Indian mother. Ten years ago, I came to Mumbai, the center of the Indian film industry, to pursue my acting career. I quickly discovered that two different worlds coexist in India. On one side, the upper class, a booming economy, high-rise buildings that house some of the richest people in the world. On the other, communities trapped in poverty who cannot progress with the rest of society. This is the story of one of those communities. My work in India has taken me to many places, and one of my favorite locations is Rajasthan. I love the way they have preserved the heritage and culture, the magnificent monuments, forts, and palaces. But after many years of being here, I realized that I had only touched the India that I was exposed to in my daily life. I decided I needed to explore the side of India that I didn't know. In Rajasthan, I often saw nomadic communities who seemed to be leading a totally separate life from the rest of India's developing society, and were not mixing with others at all. You see them traveling on their bullock carts, looking like people from India from centuries ago, as though they have been trapped in time. I discovered that they are called the Gadia Lohars. Gadi is the Hindi word for cart, and Lohar meaning blacksmith. I really wanted to learn more about these interesting people and hopefully discover a side of India I knew nothing about. My journey started in Jaipur, the Pink City. I wanted to find out from local people what they knew about the Gadia Lohars. Gadia Lohar? मैम वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, काहे के लिए उनके पीछे पड़ रहे हैं? वो लोग आपके लायक नहीं हैं। तो आप मेरी राय मानी तो आप जाइए। मैडम वो आप उनके चक्कर में मत पड़ो, वो तो बेकार के लोग हैं, हर टूरिस्ट को परेशान करते रहते हैं। Thank you. I don't like this people, man. वो अच्छे लोग नहीं हैं, दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम के न काज के, बस घर पे जाना आज के। आप जैसे टूरिस्ट आते हैं उनको परेशान करना उनकी फितरत है। आप छोड़ो इनको बातों का, रहने दीजिए। All the reactions were really negative, but that made me more determined to find out for myself. I was told that there was a Gadia Lohar community who had set up a camp in a village called Dausa, not far from Jaipur. The next day, I set off to find them. Wow, at least 10 people sat on the top of the bus right there. Okay, now we have to slow down because the cow is just casually crossing the road. There's a sign coming, guys. So we are just reaching Dausa now. Actually, I'm a little bit scared to go now. You know, I was expecting it to be dirty and not clean, but
it's quite shocking actually, just to see from outside how people are living. Wow. As everyone's come running to the car. Wow. अभी आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ अरे दे रहा हूँ रुक जाओ ऐसा मत करो अरे रुको ऐसा मत I don't know, I'm a bit scared to walk out now actually. After all of the negative comments about the Gadia Lohars that I'd heard, I was nervous about how they would react to me. As I got out of the car, everyone surrounded me. I soon realized that I wasn't in any danger and that they were eager to tell me about how they have to live. ओके मतलब कीड़ा काटती जो भी सांप गोरा अंधेरे में छोटे छोटे बच्चे बीवी बच्चे अंधेरे में रहते, लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात पानी बाहर से दूर दूर से सिर के ऊपर रख के लाते, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। गाड़ियाँ लोहार है, गरीब लोग है, मतलब ऐसी कोई बेरोजगारी है। हमारी रहने की व्यवस्था तो आप सब देख रहे हो, झोपड़ियों में रह रहे हैं। अभी तक पक्का मकान भी किसी का है, किसी का नहीं है। और दूसरी बात बिल्कुल अंधेरे में रहते, लाइट कनेक्शन सरकार ने जो योजना चलाई जा रही है बीपीएल से, वो योजना हमारे को नहीं लागू हुई, लाइट कनेक्शन नहीं करवाया। दूसरी बात पूरी शहर सिटी कॉलोनी में जिले के अंदर मतलब पानी कनेक्शन है, हमारा वो भी नहीं है। जंगल में जाते लैट्रिन बाथरूम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। बरसात आ जाती है तो खाना पाना से ऐसे सो जाते हैं, भूखा सो जाते हैं। लॉटरी निकली है नहीं, जिसमें भी 9 पट्टे, बाकी जो 9 परिवार है वो भी बेघर पड़े हैं बेचारे, रोड पे देर लगा रखे हैं। अरे हमारा है नहीं 9 पट्टा रोड में ले ऐसे बच्चों को ले रोड मारे रह रहे हम। ऐसे रहता है ये। Okay, so this is one of the houses. If you come inside with me, it's really low, like I can't even stand up in here. If you come in, we've got like 2 beds here. We have 1 fan. There's lots of chickens in here, and there's a cart. So I don't know how people are living in here. कोई मर रहा है भैया, मेरे संग आ एक जना, अब मेरे संग आओ। देखो ये ऐसे तो रहता है, ये देखो ये बेड है। हाँ ये 4 भाई है। हाँ हाँ हाँ। अब अंदर हम ये अब देखो इसमें रहता है, ये ऐसे ही है। So yeah, this is one room where he's saying 4 to 5 people will sleep. There's no bed. There's nothing here. It's just and the smell is so bad. Yeah, it's bad. अब ये करो, अब इसमें बाथरूम करता है, यहीं नहाता है। This is the bathroom. कैसे पानी क्या मिलेगा? पानी भर के लाता है। Okay, so they get the water from outside, and they bring it here, and they use this bucket as a bath. So yeah, that's the bath. There's absolutely no privacy here for the men or the women. The women have to bathe in front of everyone with absolutely no privacy at all. I was shocked by their living conditions. This particular group of Gadia Lohars had been camped on the site for several months, living in their carts and tents, making use of any half-built outhouses or derelict buildings that they could. Their wish is to be settled in one place, but finding a permanent location is difficult. They have no status and the authorities can move them on at any point. See, we've got more tents over there. As I walked around, it made me sad to see the deprivation in this community. However, it seemed that no matter how little these people had, they were still making the best of their situation. Hi.
कैसे? What are you making? क्या बनाया हो? How do you do this? मैं पता नहीं. How do you make this? पहले first. पहले नंबर बता इनको बताते तो हाथ में से मैं पता नहीं. What do I do? बोलो. ऐसे कर Yes. उनको बताओ गोल गोल करो उनको बताओ आप कर गोल गोल करो ऐसे करो तो भी कर मैं भी जल्दी जल्दी बड़ा भाई तो ले आ दे बड़ा ये वहां छोटा पूरा ये? Like this? ये ऐसे? ऐसे बना वो कर रहे हैं हम कर वो लेके कर लीजिए तो So कैसे? कैसे? I think no matter how many times I try this, I'll never be able to get it as round as she made it. So yeah, she wasn't happy with my roti making skills. Not good. Keeping their large and extended families fed is a daily challenge for the Gadia Lohars. Sugna. It's Sugna. Very nice. नौ महीना 9 महीना. आपके पास कितना पैसा? हाँ बिल्कुल एक ही? Okay. Do you want him to go to school? फटावा तो पैसा बिना कहीं से फटावा तो जहाँ पर पैसा नहीं है खावा को रोटी भी नहीं है तो फटाई कहाँ से जाओ कलेक्टर बन जाओ कहीं भी बन जाओ बड़ा अधिकार बन जाओ तो लवारियाँ का कहीं अधिकार भी नहीं है फटिया लिखा भी नहीं है फट जाओ तो अधिकार बन जाओ It had been a really emotional day. हिंदी में बतलाऊंगा वहाँ जाओगा यहाँ As I left, I wanted to give them some gifts. I was upset by their reaction because it made me realize how desperately poor they are. Going back that night, I felt a deep sense of guilt and sadness. I would have a comfortable bed, but the Gadias wouldn't. I wondered why, in such a developing country, are these people living this way? I wanted to find out more detail about the Gadia Lohar's origins. I did some research on the internet. The Gadia Lohar's forefathers came from Mewar state in Rajasthan. In the capital city Chittor is the historic Chittorgarh fort, regarded as their spiritual home. In the late 16th century, the king of Mewar was Maharana Pratap. The Gadia Lohars were his loyal followers and the royal blacksmiths, making weapons for the king and his army. Mewar came under attack from the Mughal Emperor Akbar, whose army greatly outnumbered Maharana Pratap's warriors. In 1576, the Battle of Haldigati took place, and Maharana Pratap and his followers were forced to flee. The Gadia Lohars swore loyalty to Maharana Pratap and chose to live a nomadic life on their bullock carts. They vowed never to return to Chittor until the Mughals were defeated. I discovered a piece of news film about the Gadias from 1955. India's Premier, Mr. Nehru, recently led this unique procession through the town of Chittorgarh.
The story really began 400 years ago when the Gadia Lohars, or royal blacksmiths, vowed to live a nomadic life, never even sleeping under a roof, until their city was liberated. A sad story, but its happy ending came when Mr. Nehru hoisted a flag on the Victory Tower of Chittor fort. The blacksmiths, over 4,000 of them, had come home again, intent on settling down to lead a normal life at last. This made me even more curious, because the Gadia Lohars I had just met had certainly not settled down to lead a normal life. I decided to travel to Chittorgarh Fort, which played such an important part in their history. In 1955, Pandit Nehru, India's first Prime Minister, had the Gadia's 5 oaths inscribed on a stone plaque in Chittor. In a ceremony at the fort, he then released the Gadias from their vows. I could find no written records of the Gadia Lohar's history, so I wanted to see the stone for myself and discover exactly what the 5 oaths were. They took the following vows: never to return to Chittor, never to live in a house, never to sleep in a bed, never to light a candle, and never to drink water from a well. They adopted a very simple nomadic lifestyle, moving from place to place and living in their bullock carts. For 400 years they followed their vows and remained faithful to them. Pandit Nehru had also granted land and benefits to the Gadias, but sadly subsequent governments failed to deliver on those promises. It's really shocking that these people who fought for their country and were so loyal to their leader Maharana Pratap, honoring the oaths for so many years, are now living as a forgotten community. Today the Gadias continue their traditional work as blacksmiths, as they did for Maharana Pratap centuries ago. This is their only source of income. Many of the Gadia Lohars still follow the tradition of living and traveling on their carts, known as the Gadi. के लिए गाड़ी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में हमारे ब्याह शादी होता है, बच्चा बच्ची गाड़ी में रहता है। गाड़ी बगैर हमारे कुछ भी नहीं है। गाड़ी से हम बहुत प्यार रखते हैं, बैल वैल सब उसमें रहता है हमारा। हम गाड़ी बगैर जी नहीं सकते, कई पीढ़ी से हमारा इसमें गुजारा चलता है गाड़ी के। मेरे 5 बच्चा है और बीवी है, इनके साथ रहता हूँ मैं। जब ऐसे लंबा चौड़ा और भी परिवार रहता है, उनके साथ ही रहता हूँ। वहाँ पर ही कई आदमी, कई 10-20 आदमी वहाँ रहता है, उनके साथ धंधा करते हैं। जब धंधा नहीं मिलता है, जब हम हमारा सामान को इकट्ठा करके और गाड़ी के अंदर रख के हम आगे चले जाते हैं। तो आगे जाने से क्या है, आगे धंधा मिल जाता है 2-4 रोज़ का, तो वहाँ कर लेते हैं। फिर वहाँ धंधा नहीं मिलता है तो वहाँ से भी हम आगे चल जाते हैं। जब हम आगे जाते हैं ना साहब, जब आगे जाने से क्या होता है, कई गांव के लोग बाग ऐसा रहता है जो हमको रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है। जब वो क्या सोचते, घुमड़ जाति के लिए नफ़रत करता है। जब नफ़रत करता है नहीं तो कई लोग तो नफ़रत करता है, कई लोग नफ़रत नहीं करता है। जब वहाँ से हम आगे, वहाँ से हटा के आगे चले जाते हैं। जब इधर की साइड नहीं रहने देते तो इधर वाले घर वाले रहने की हम कोशिश करते हैं साहब। हम उनसे पहले बूझ लेते हैं
कि आप लोग यहाँ रह जाओ, आपका धंधा कर लो 2-4 दिन के लिए और आप चले जाओ। I met a traveling Gadia Lohar family who wanted to show me how they make their iron utensils. Namaste. Namaste. What are you making? ये कुर्सी बना रहे सब्जी डालने की। Okay, so this is the finished product? ये पलटा। Okay. So कैसे बनाया? इसमें कोयला डालते हैं, चद्दर लाते हैं, उसको कूट पीट के इसमें देकर गरम करके बनाना पड़ता है ये। अच्छा। दोनों बरोबर मेहनत करते हैं बरोबर की। ये पंखा चलाती चोट देती है जब बनता है ये। Okay. How do you sell this? इसको बाजार में बेचते हैं, गांव में बेचते हैं, सर पे रख लेते हैं, गांव में बेचते हैं। And how much would this sell for? ये 50-60 रुपये। How many do you sell a day? इसमें 6, 7, 8 जैसे आपको सिखाऊंगा बनवाना। हाँ? Okay. Okay. Is it दो like this? Is it? हाँ बनाना सिखाऊं दो। हाँ दो बनाना सिखाऊं। दो जोर से दो जोर से बनाना सिखाऊं आपको। दो जोर से दो। Okay, bas. It's very heavy. अरे राम राम। And when are you going to the market next? कल चलेंगे। Oh, I can come with you? हाँ कल आप चलोगे ना दिखा दूंगा मैं। Okay. चलना मेरे साथ। ठीक है। Gadia women work hard. They fetch the water, make the food, tend to the livestock, and play an equal part in the blacksmith work. Men and women share the labor. ये मेरा पति है, औजार बना रहा मिलके। क्या कमाई नहीं है, क्या खाएंगी? गण मार रहा दोनों मन मिलके कमाई कर रहे, क्या करा? पेट खाने को मांगता है। रोटी तो खा चाहिए। दोनों भेड़ा मिलके काम करे, क्या करा? पेट भरता है, क्या करा? मेहनत करता है, क्या करा? हाँ, गेहूं काटना की गेहूं काटना की पन्ना करा गण बावा, क्या करा? करना पड़े समाते पर मेरे को सलाना पड़े वे पन्ना सीखता है। The entire family is involved in the ironwork. One person operates the mechanical bellows to fan the fire that heats the iron.
Once it's red hot, another holds the object with pincers, and then 1 or 2 people hammer the metal to refine and shape it. The Gadia Lohars were once highly respected craftsmen of fine armoury from Maharana Pratap. But now their work consists of repairing and sharpening tools and making simple household utensils and agricultural implements. I went back to visit the family who had shown me how to make tools. Hi, namaste. कैसे हो? कैसे है? Hello. 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 So हम मार्केट जाना? चलो. Okay. सिगरेट साफ है ये करो सामान लगाओ ना सारे दिन अच्छा भाई ले लो नहीं है ले लो एक When the family first laid out their tools on the street, people crowded around and we quickly sold several items. But I soon realized that it was my presence and the camera being there that was attracting the customers. I decided to leave and watch from a distance. Once the camera was out of sight, the customers disappeared. The family sat on the pavement for the rest of the day and only sold a few more items. Mass-produced tools have overtaken the Gadia's livelihood. They cannot compete. It has made them one of the lowest below poverty line communities in India. Their day of selling only made them around 100 rupees, just enough to buy vegetables for the next few days. If the Gadias don't sell enough, often they'll have to go hungry. I saw differing levels of poverty in all the Gadia Lohar communities that I met, but the ones that were still living a traveling life were in a poorer state than those who were settled. A nomadic lifestyle is not sustainable in today's developing India. Although released from their vows by Prime Minister Nehru, it's clear to this day that some Gadias are still influenced by the oaths their forefathers took from Maharana Pratap. Some do want a different life, but they don't know how to live any other way. I found out that the Gadia Lohars have a senior head of the community named Galuram, so I travelled to Pushkar to meet him. नमस्ते नमस्ते कैसे हो फर्स्ट क्लास फाइन बढ़िया Galuram is a passionate advocate for the rights of the Gadia Lohars. He has been struggling with the authorities and has an ongoing campaign to secure designated land for some of the Gadia Lohar communities. इनको अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ गृह मंत्री राजस्थान का बहुत बड़ा होता है तो मैंने कहा साहब मतलब हमें टाइम दीजिए तो वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप कॉलोनी का रेस करते हैं ये लोग सेटलमेंट हो जाएंगे ठीक है
उन्होंने 6 तारीख दे दी है। 6 तारीख की, ये अगले महीने की 6 तारीख अक्टूबर की। हम खुश हो गए कि चलो गृह मंत्री जी आएंगे। Galuram went on to tell me that the minister kept changing the date for the handover of the land, delaying the entire process. It was clear that the battle to improve conditions for his people is a very emotional one for him. मैंने भी वहाँ पे प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इनको सेटलमेंट नहीं कर दूंगा, इनके बच्चों को मैं पढ़ा नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर। अभी भी मैडम खाने को लोगों को भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन वो चोरी डाका रेप नहीं करते, गुनाहों से दूर रहते हैं लोग। मेरे बात है कि मुझे कम से कम ऐसे समाज में जन्म दिया भगवान ने, मेरे को ही समाज में जन्म देकर और इनकी सेवा के लिए मुझे भेजा है, ये मुझे बड़ा गर्व है। ऐसी बात है। देश में लोगों से लड़ना, इनको वास्तविक हक दिलाना, एक बहुत, मैं कह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप भी होते ना तो वो भी हाथ टेक लेते थे। ऐसा हालत अभी देश का है और हमारे इंडियन लोगों का है, जो ऐसे देशभक्तों के लिए वो लोग कोई भी नहीं करते। हम देख के चले जाते हैं कि इसको खाना मिला है कि नहीं है, ये चैन से सोया कि नहीं है, हम नहीं देखते, हम ऐसे कैसे चले जाते। Meeting with Galuram made me begin to understand the suffering that can come from not having the security of a permanent place to live. I met a family who have endured great hardship without a stable home. One of the sons, Rakesh, showed me where the family live. Okay. Namaste. Soni lagdi. So Rakesh is saying that for people stay in this small tent, him and his brothers and his mom. His dad has expired. Where does everyone sleep? नहीं मैम, एक दो और है ऐसे बनाए हुए हैं पलंग। And your mom stays in here as well? Yeah, ma'am. Yeah. Okay. So, Auntie, how long have you lived here? यहाँ तो 3 साल है। 3 साल. Okay. वहाँ पे रहता था चित्रकूट में, तो वहाँ से जीडा वाला हटा दिया हमारे को। बरसात के मौसम में ला के यहाँ पे गिराया, तो बहुत बरसात पड़ता, पूरा सामान भीज गया। ऐसे सब खाना हाना कहाँ, 5 दिन तक खाना भी नहीं खाया बच्चा, कोई बिस्कुट विस्कुट ला के देता था। बहुत परेशानी देख गया था हम। जीडिया वाला कुछ भी बोला यहाँ पे देंगे, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे हम तो कई दिन तो पानी कहाँ से घरों से मांग मांग के पानी लेके आता, पानी भी नहीं आया यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ एक सरकारी बोरिंग है, वहाँ से चालू कराया, जो फिर वो सब बस्ती मिल के पैसा दे देंगे, वो पानी पीता है, पैसा देंगे। So, have they spoke to anyone in the government about this to try and help them? No. Have you tried to speak to someone? हाँ, पापा थे तब तक 2-3 बार उनको बोला भी था, फिर तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कौन सुनते हैं। कभी भी आ सकते हैं, कभी बैठा सकते हैं, कोई पता नहीं है। हाँ, तभी तो यहाँ पे ऐसे बना रखे हैं कच्चे, कभी बैठा सकते हैं, तोड़ देंगे इनको भी है जी। Now your father's not here, what do you plan to do? How do you plan to make money and keep the family fed? अभी तो जैसे 1 साल की मेरी कॉलेज है, तो जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब भी अभी तलाश कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब मिल जाती तो उससे घर का खर्चा तो कैसे भी चला लेंगे, और इसके बाद तो मेरे को जॉब करनी है, तो जॉब करके घर का तो मेरे को चलाना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं चाह रहा। Does he plan to shift his family to a house, or will they stay living like this forever? वैसे तो देखो, अगर अच्छी जॉब वगैरह लग जाती है तो सारा परिवार को सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे अच्छा घर बनाएंगे, मम्मी पापा तो है नहीं, मम्मी को अच्छे पहले से ज़्यादा बेटर अच्छी लाइफ दे सकेंगे अगर पैसा आएगा। And what does his mum want? Does she want a house?
घर है कहाँ किस्मत में लिखा ही नहीं तो कैसे घर में रहेगा। घर किसी को अच्छा नहीं लगता है, घर में सब भी बैठना चाहता है, हम घर भी नहीं तो रहता कहाँ। करेगा तो अच्छा ही है, इसीलिए तो हम तो बहुत परेशानी देके आए, इनको कुछ भी नहीं कराया हमने। कहीं पढ़ो आप थोड़ा बहुत, हम तो रह गया जो रह गया। जैसे हम तो कैसे पेट भर लिया, अभी अपना नहीं तुम्हारा टाइम पास नहीं होगा, हम तो कर लिया, हमारी टाइम पास हो गया यार। फिर ये अब छोटा छोटा है, इनको तो हमारे को संभालना है। After hearing so many stories about the issues of water supply, I wondered, what is the government doing to improve matters? I managed to arrange a brief meeting with the Minister of Water. I wanted to ask him if he could solve the problem at a particular location that I had been to. आप यदि प्रॉपर स्थान का नाम बताएं तो मैं उनके लिए जो भी व्यवस्था है, हैंडपंप से उनका काम चल सकता है, हैंडपंप, ट्यूबवेल उनको चाहिए तो ट्यूबवेल, अथवा उनकी बस्ती में पब्लिक स्टैंड बना करके उनको पानी, आप स्थान का नाम बताएं, उनकी एप्लीकेशन में तुरंत 24 घंटे में व्यवस्था कर दूँगा। ऐसे इलाकों में आप जाएं ना तो उस लोकेशन से एक एप्लीकेशन लेकर के हमारे पास पहुँचाएगा। Then we will sort out. I will solve their problem. Yeah. Just now. So from now on, every place we see without water, we will call you and it'll get solved. Okay. We'll sort out. हाँ, उसके पास में कोई गाड़िया वालों की बस्ती है, वहाँ लोगों को जमीन मिल गई लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं मिला, आप इमीडिएट वहाँ पानी की व्यवस्था कीजिए, ठीक है? और मुझे बताना आप क्या व्यवस्था है। यदि वहाँ कोई हैंडपम्प से दे सकते तो हैंडपम्प से, पब्लिक स्टैंड लगा सकते हो पब्लिक स्टैंड, और यदि कोई कनेक्शन चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको कनेक्शन दिया जाए। गाड़िया लोहार कोई भी बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। For the next few days, I tried to contact the minister to follow up on his promises, but he was unable to take my calls. Up until now, no water supply has been provided at the location I told him about. The Gadias are often overlooked. I wonder, how can they ever change their destiny? On my travels, I noticed a school named the Gadia Lohar school. It was neglected and empty, with no pupils. This was worrying. I strongly feel that one of the ways the Gadia Lohars can break out of this cycle of deprivation is by getting an education. But to do that, schools need to be available to them, and the Gadia children need to attend them. I was able to meet the Minister for Education to discuss this. He told me many Gadias are not being educated. Lack of awareness is the one reason. They don't know the importance of the education for them. So there is a one reason. Second, these communities moving from one place to second place to earn their economy or livelihood. So that's why they are not settled at a one place. That is also another reason. Even those who are adult, they also must be educated. Unless until their parents, their mother, father, they are not educated, they will not send their children to the schools. So first thing is required to educate their parents, their old family members. So what is the importance of the education? पढ़ा लिखे नहीं है, टाबर गाँव के मोहरे में थोड़ा दिमाग उबारे, तो ऐसे धूड़ा में रमते, ये धूड़े ही खाते, ये गाँव के ये पेट्रोल ही फटते, ऐसे पीटे लिखा नहीं है, स्कूल को लारे निकले हो, आगे नहीं निकलेगा, ऐसे है। आपका नाम क्या है? लीला। हाँ, you go to school? क्यों? बकरी चराते हैं। You want to go to school? नहीं। You never want to go? पहले जाती थी। Okay. And then why did you stop? बकरी कौन चराए? Your mom can't do it? मम्मा बोल रही है, मम्मा घर पे रहती। Do you want to go back to school? नहीं। No. What do you want to do when you grow up? अब क्या बनेंगे? कुछ नहीं, डॉक्टर, टीचर, कुछ नहीं?
अब तो बन गया। I visited a settled Gadia community. Hello, आपका नाम क्या है? I wanted to know if having a house and somewhere permanent to live made it more likely that the Gadias would access education. Thank you. And I did find some Gadia Lohar families who see the importance of sending their children to school. What's his name? Krishna. Krishna. How old is he? 2 years old. I spoke to Priyanka and her mother. दादा मैं पढ़ती भी हूँ और इन बार इंटरेस्ट भी है मेरे को इतिहास में। मैं पढ़ती हूँ, मेरी बहन पढ़ती है, मेरा भाई पढ़ता है और एक भैया ने 10th पढ़ के छोड़ दी। उनको घर मतलब जो हमारे ये काम था ना उनमें पापा ने उनको साथ ले लिया था, इसलिए उनकी पढ़ाई छोड़ना पड़ा उनको। पढ़ के अभी तो पता नहीं आगे पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सोच रही हूँ पढ़ूंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी। और ऐसे समझते हैं कि लड़कियां पढ़ती नहीं है, क्या करेगी पढ़ के, उनको तो अपना आगे का ससुराल संभालना है और कुछ ही नहीं है। हमारे यहाँ से जो मोहल्ले में जो हमारी बड़ी लड़कियां हो जाती है तो उसका माँ बापों का जीना आराम कर देते हैं देखने वाले से जो हमारे पड़ोसी, तुम्हारी शादी नहीं करेगा, तुम इतनी बड़ी लड़कियां तुम घूम रखी है, तेरे को कैसे नींद आती है, तेरे को कैसे जो तुम रहना चाहती हो, तुम इतनी बड़ी लड़की घर में कैसे रखी है, तुमने शादी की क्यों नहीं की, इसने शादी करो इसकी। मम्मी है ना मेरी मम्मी, तो पढ़ाई के चक्कर में हमें बहुत बेकाया था कि नहीं पढ़ने देंगे, मम्मी ने मना कर दिया था। मेरी 2 साल तक स्कूल भी छूट गई थी, फिर पापा ने हिम्मत जताई, मेरे पापा पढ़े हुए हैं तो पापा हम पढ़ाई का मतलब जानते हैं, उन्होंने भेजा कि तेरी मम्मी को तो मैं संभालूंगा, तो स्कूल जा, फिर बैग उठा स्कूल जा। मैं बैग उठाई स्कूल चली। हम है ना पूरे मोहल्ले में से 3 लड़कियां हैं, लेकिन हम स्कूल 3 लड़कियां जाती है बड़ी। Attending school can be difficult if you live in a camp. Tina. I talked to Sandeep, a 4th-year pupil. मेरे दोस्त कहते हैं तुम मेरे एक बार घर चल, मैं ऐसे कहता हूँ मेरे तो झुग्गी झोंपड़े आपके मकान है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा की सुविधा करूँगा, बढ़िया घर बनवाऊँगा मेरा, और मैं इसलिए सबसे दुआ करता हूँ मेरा घर बनना चाहिए, उसको नौकरी मिल जाए, टीचर की नौकरी मिल जाए, उसके फार्म उसके नौकरी के मैं कर सकता हूँ। Even though the Gadia Lohars endure poverty, harsh living conditions, and lack of education, one really positive aspect to their lives is the importance of family. I was invited to a Gadia Lohar wedding. आज शादी day. Yeah, excited? खुश हो? Yeah. Hello. So how is everybody related? Like sister? Ben, sisters. 3 sisters. And शादी होगी. Oh, okay. So आप कल ही? इसकी शादी है आज, हमारी पहले. Oh, okay. And how many brothers? कितना भाई? भाई 5 है. They're here? एक. So all together 8? Wow, बहुत है. So your daughter's getting married today. How do you feel? अब दुख तो होता ही है भाई। जोर बोल दो। हाँ तो काहे करा भाई जी, अब दुख तो होता ही है, आत्मा तो टूटती है भाई, माँ की तो माँ की रहती है। So if your daughter does not like her husband, can she get divorced and leave? हाँ, उसको दुखी करेगा तो उसको ऐसे हाथ जोड़ के कहेंगे भाई एक बात इसको दुखी मत रखो और एक बात अच्छी तरह रखो, दोनों जन अच्छे आराम से रहो, प्रेम से खाना बनाओ, प्रेम से रहो। But if they don't, is it accepted for the wife to leave and come back to the family?
वो लड़की नहीं रहती है, नहीं तो फिर वो दोबारा भी आ सकती है। फिर एक बार लड़की जाना चाहती है तो चल जाओ, और नहीं जाना चाहिए तो दूसरी जगह भेज देंगे। Is it expensive getting your daughters married? महंगा पड़ता है, सब चीज़ ही महंगी पड़ती है। How much does it cost to get married? पड़ जाएगा 2-2.5 लाख रुपए का हिसाब हो जाएगा पूरा। So how did you save that money? ये पैसा तो ये कोई गरीब आदमी है, कोई मोटा आदमी के पास ब्याजू ना लाते हैं, भाई लाओ हमारे को दे दो थोड़ा बहुत पैसे, हम शादी करेंगे बच्चे के लिए। 2 रुपये सैकड़े, 3 रुपये सैकड़े, 5 रुपये सैकड़े ऐसे करेंगे। फिर उसकी मेहनत करेंगे, जो ऐसे कमा कर उनको देंगे, लेट सेट देंगे तो वो गाड़ी की लोद काटेगा। It was clear to me that a successful marriage, having a big family and lots of children, is important to the Gadia Lohar's way of life. So you don't have kids? आपके बच्चे नहीं हैं? Do you want kids? आपको चाहिए? चाहिए, बच्चा बने तो कौन रहता है बनने बच्चे, तो सबको बच्चा चाहिए। Okay, nice. To pay for a wedding like this would put the bride's parents in debt for years to come. It's a huge sacrifice, but one that Gadia Lohars are happy to make. They only marry within their own community, and the choice of partner is made by the parents. The bride got ready in 10 minutes by the side of the Gadi. This would be the first time that she would ever see her groom. I felt so privileged to have been welcomed into such a happy event. I remembered what I was told in Jaipur before meeting the Gadia Lohars, that I should stay away and that they are dangerous and untrustworthy people. But what I found was the opposite.
It was hard to understand the negative reputation the Gadia Lohars seemed to have after the positive experience I had with them. I wanted to confirm how they are viewed by the local authorities. I managed to get a meeting with the Commissioner of Police for Jaipur. I'm pleasantly surprised that these people, they are not criminals. They are very, very law-abiding citizens. They have very, very rare cases against them, negligible almost. And also surprising is that they are not complainants in many cases, like they are contented people. The general perception is that when they move around from one place to another place, they go to any village and they take care of all the customs and traditions of that particular village. So they are not in conflict with the local people. However hard the Gadia Lohar circumstances are, they clearly do not turn to crime. They are in fact peaceful and hard-working, a huge contrast to their reputation as a community. I went back to see the Gadia Lohars, but they had already been moved on. I really hope one day that these proud and warm people will get the recognition and the support that they deserve.